राम राम भाई सारियाने। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड वीडियो ऑफ द सेकेंड एपिसोड। तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड में। एंड सोमवार से लेकर सैटरडे तक ये वीडियोस चलते रहेंगे और संडे को आपकी एग्जाम रहेगी। तो चलते हैं क्विज की तरफ। First question: which is the largest ocean on Earth? Pacific Ocean is the largest ocean. Which gas do plants take in during photosynthesis? कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दरमियान। और विच इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन? क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है। और सन से हमारा अर्थ जो है थर्ड प्लैनेट है। मर्क्यूरी, वेनस एंड द थर्ड प्लैनेट इज अर्थ। मार्स इज द सेकेंड प्लैनेट। नो सॉरी, मार्स इज द Mercury, Venus, and the Earth. Mars is a. Go with the sequence and you will know where the Mars is. May I write on this? Is it possible to write? I don't think so. Wait. We will go with the sequence now. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Then Mars is the which planet? This is the Mercury, and this is the closest to the Sun. And Mars is fourth planet, and our Earth is third planet. Okay, so Mercury is the closest planet to the Sun. The shape of the Earth is spherical. Which one is man-made source of water? Lake, pond, river, or canal? Canal is the मैन-मेड सोर्स ऑफ वाटर। जहाँ पे पानी मिलता है वो भी सिंथेटिक, कैनल सिंथेटिक है। ये सब लेक, पॉन्ड एंड रिवर आर द नेचुरली मेड। एंड व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? मेन सोर्स क्या है एनर्जी के लिए अर्थ? व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ? मेन सोर्स इज सन। विंड नहीं है, मून नहीं है, फायर भी नहीं है। तो main source of the energy for the earth is sun. Which direction does the sun rise from? Sun rises from the east. Okay, then the area around us is called surroundings. देखो, there are the options: surroundings, atmosphere, space, and weather. And the area around us is called surroundings. विच ऑफ दिस इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स? इसमें से नेचुरल रिसोर्स कौन सा नहीं है? तो एयर इज द नेचुरल रिसोर्स, वाटर इज द नेचुरल रिसोर्स, सॉइल इज ऑल्सो द नेचुरल रिसोर्स, एंड द प्लास्टिक इज नॉट द नेचुरल रिसोर्स। व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स? उसे इक्वेटर कहते हैं। वो डिवाइड करती है दो भागों को, अर्थ के दो भागों को डिवाइड करती है और उसे इक्वेटर कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न इज कॉल्ड forming pattern is called constellation. Stars, group of stars and forming a pattern is called constellation. स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स रहते हैं और वो क्या करते हैं, एक पैटर्न फॉर्म करते हैं और उसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। विच वाटर बॉडी हैज साल्टी वाटर? साल्टी वाटर सी में होता है, पॉन्ड, रिवर एंड लेक में नहीं होता है साल्टी वाटर। सी में क्या होता है? साल्टी वाटर होता है। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड, द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस at a given time is called weather. Atmosphere condition at a place in a given time, उसी टाइम पीरियड में वेदर होता है वो। ठीक है, मतलब कंडीशन कैसा होता है उस प्लेस का एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड वेदर। स्नोई वेदर, रेनी और क्लाउडी वेदर, ये डिपेंड्स अपॉन many factors, but
Weather is the phenomena of day to day basis. विच ऑफ दिस इज नॉट अ सीजन इन इंडिया? इसमें से सीजन कौन सा नहीं है? तो ये स्नोफॉल इज नॉट अ सीजन. समर, विंटर एंड मानसून आर द सीजन्स. दिस क्वेश्चन हैज बीन, many of the questions are going to repeat, but I think this should not be repeated. It's very easy, and it has of no relevance here. Once came, it's fine, but the next time also came, then it is making a nuisance. Where do penguins live? Antarctica. पेंगुइन कहाँ लिव करते हैं? अफ्रीका में नहीं, एशिया में भी नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं, अंटार्कटिका में पेंगुइन लिव करते हैं. एंड वेयर द कंगारू is the national animal of which country or continent? That is Australia. और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू रहते हैं ज़्यादातर, एंड वहाँ पे नेशनल एनिमल उसका कंगारू है. तो व्हाट डू वी कॉल द मॉडल ऑफ अर्थ? मॉडल ऑफ अर्थ को ग्लोब कहते हैं. मॉडल ऑफ द अर्थ को ग्लोब कहते हैं. एंड वो अगर चार्ट पर दिखाना चाहे अर्थ को, तो उसे मैप कहते हैं. विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ? ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ. अब हम मूव करेंगे साइंस की तरफ. एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड herbivorous animals. Which part of the plant prepare food? Leaf prepares the food. The hardest natural substance is diamond. Which organ pumps blood in our body? Heart pumps blood in our body. The gas we breathe out is कार्बन डाइऑक्साइड. जो हम ब्रीथ आउट करते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जो ब्रीथ इन करते हैं वो ऑक्सीजन होता है. विच इज अ रिवर्सिबल चेंज? रिवर्सिबल चेंज कौन सा है इसमें? बर्निंग पेपर इज अ रिवर्सिबल चेंज? नो. रस्टिंग आयरन, ये रिवर्सिबल चेंज है क्या? रिवर्स हो सकता है क्या? अगर आयरन को जंग लगता है तो नहीं हो सकता है. मेल्टिंग ऑफ आइस, जब मेल्ट होता है आइस तब उसको रिवर्सिबल कर सकते हैं क्या? उसको बर्फ बना सकते हैं क्या बाद में? हाँ, रिवर्सिबल चेंज है. कुकिंग फूड होने के बाद उसको रॉ फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? इट्स नॉट पॉसिबल. तो रिवर्सिबल चेंज में मेल्टिंग ऑफ आइस होता है. विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू थिंक? थिंक करने के लिए ब्रेन. ये ऑर्गन जो है हमें थिंक करने के लिए मदद करता है. ब्रेन से ही हमारे विचार उत्पन्न होते हैं. द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज स्किन. स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का. विच एनिमल लेज एग? hen lays egg. Cow, dog and cat doesn't lay eggs. Which is a source of light? सोर्स ऑफ लाइट कौन सी है? सन इज द सोर्स ऑफ लाइट. स्टोन, वुड कभी लाइट नहीं देते, एंड मून गिव्स द लाइट बट इट रिफ्लेक्ट्स द सन. ऐसा ही कुछ मतलब सन का वहां पे सोर्स रहता है, इसलिए मून से हमें लाइट मिलती है. Which of this is not a sense of organ? Which of this is not a sense organ? इसमें सेंस ऑर्गन कौन सा नहीं है? लीवर इज नॉट द सेंस ऑर्गन. आई, नोज, स्किन एंड ears and tongue are the sense organs, but skin is not, liver is not the sense organ. What do we call the young one of a frog? Tadpole कहते हैं उसे. Plants breathe through. Plants breathe through stomata. Yesterday I have said that the plant breathes through stomata. Which liquid is called universal solvent? Water is universal solvent. Which of these is a simple machine? Simple machine, liver जो है simple machine है. And which vitamin do we get from sunlight? We get vitamin D from sunlight. Which energy is stored in food? Chemical energy is stored in food. Now we will go with the history. Who is known as the father of nation? Mahatma Gandhi is known as father of nation. Where did early humans live? Caves में रहते थे early humans. The Indus Valley people worshipped. Indus Valley people worshipped mother goddess. Mother goddess को वो worship करते थे. And
हु बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल को बिल्ड करने वाला शाहजहां था. द फर्स्ट इंडियन एम्परर टू सपोर्ट बुद्धिज्म वाज अशोका. And who built yesterday's question was who built Red Fort? तो रेड फोर्ट किसने बनाया? वो भी शाहजहां ने बनाया. गो विद द प्रीवियस वीडियोस बिकॉज you know the quiz will be taken on Sunday on the videos of this week. The first Indian emperor to support Buddhism was Ashoka. Which material was used in Harappan houses? Bricks were used in Harappan houses. The Great Bath is found in Mohenjo-daro. Mohenjo-daro में वो Great Bath is found. And who discovered the sea route to India? Vasco da Gama discovered the sea route. What were the earliest books of Hindus called? उसे वेदास कहते हैं. जो अर्लीस्ट बुक ऑफ हिंदूज होते हैं उसे वेदास कहते हैं. इन एंशियंट टाइम्स पीपल एक्सचेंज्ड गुड्स थ्रू बार्टर सिस्टम. पहले बार्टर सिस्टम था, अभी ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ. विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया? Indus Valley civilization is the oldest civilization. Whose slogan was "Do or die"? भगत सिंह का था क्या? नहीं. भगत सिंह का क्या था? इंकलाब जिंदाबाद. सुभाष चंद्र बोस का गिव मी अ ब्लड आई विल गिव यू द फ्रीडम. गांधी जी का डू और डाई. नेहरू जी का पता नहीं, उनका स्लोगन ही नहीं था शायद, उसे उन्हें बस चाचा कहते थे. Who was the first prime minister of India? First prime minister was Nehru, Jawaharlal Nehru, चाचा जी. What do we call the period before writing was invented? Prehistory. उसे क्या कहते हैं? What do we call to period before writing was invented? Prehistory कहते हैं उसे. And what are the large stone structures built in Stone Age called megaliths? What are the large stone structures built in a Stone Age? कहाँ पर बिल्ट हुए? तो स्टोन एज में बिल्ट होने वाले लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स को मेगालिथ्स कहते हैं. विच लीडर इज नोन एज नेताजी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस. एंड नाउ वी विल end this quiz here, and I hope you are enjoying these videos. and Sunday को तैयार रहिए क्विज देने के लिए. धन्यवाद.